हाय गाइस, वेलकम टू ओएस हब। केमती अच्छा आपण मैंने तो आज पॉलिटी आउ गोटे सेसन मुझे नहीं आसी। आई होप आपण मानक ये कम आसो। जो मैंने देखुं जो मैंने इथर प्रिलिम्स दौरान दिंतु भल से 15 डेज लेफ्ट रेडी होगी एफर्ट लगे पार्टी। दिस इज द बेस्ट टाइम माने एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम ऑल्सो यू से अनुसार प्रिपरेशन करंतु। मो ऑडियो एंड क्लियर टू एवरीवन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो आपण माने समस्त रेडी तो स्टार्ट। तो आमे 9 अक्टोबर रु बैच स्टार्ट होची सुपर 30 बैच, जो थे आपण फंडामेंटल रु आगो को आपण करिवे भल से पाठ पढ़ी पारे। एवं दिस इज द लास्ट बैच। या पर आमे आ किछि बैच स्टार्ट करूनु। या पर मेंस बैच स्टार्ट हो। सो आपण माने जो माने एडमिशन नबार अछि केवल 30 पिला दरकार ऑफलाइन रे एवं 30 पिला ऑनलाइन रे। वी कैन नॉट अफोर्ड मोर देन दिस। हमरो बेसी पिला नेले आमे पढ़िया पय हमको असुविधा हुए, कहना आमे तो कंसंट्रेट करि पारुनु। 30 पिला आमर दरकार, 30 पिला 30 स्टूडेंट। तो सिमिलरली गोटे आरंभ बैच अच्छी जो मैंने +2 पर जो मैंने ग्रेजुएशन रे पढ़ुचंती फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर तांके भी ये गुड बैच एडमिशन। तो स्टार्ट करिवा ओपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्टार्ट करिवा एंड देन आमे स्टार्ट करिवा। The provision of providing identity card to voters has been made in समस्ते जवाब दियंतु आज्ञा, जवाब चाहिए, जनता जवाब मांग रहा है। The provision providing identity card to the voters has been made in Constitution of India, Representation of the People Act, Election Amendment Act 1975, Criminal and Election Law Amendment Act 19 identity card। आइडेंटिटी कार्ड जल्दी जल्दी जवाब दियंतु। आइडेंटिटी कार्ड तो ये क्वेश्चन रे somehow there is a issue. It is neither constitution nor representation of people act nor this one। तो से भाया किसी मेंशन नहीं। सो ये क्वेश्चंस डाउटफुल क्वेश्चंस थिला। आधार कार्ड जेमती यूआईडीआई कार्ड आंती वोटर आईडी कार्ड इशूड बाय द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया। सो देयर इज नथिंग लाइक दैट, से भाया किसी नहीं। Similarly, Indian passport issued by Ministry of External Affairs of the and PAN card issued by some test department, IT department. How among the following describe Indian economy as a bulwark of capitalism? ये describe करथिले रजनी कुठारी हो, अतुल कोही, लॉयड एंड सुसैन, रुडल्फ एंड ग्रेनवाइल ऑस्टिन ये कहिथिले इंडियन इकोनॉमी ए bulwark the bullock cart। गुड इवनिंग कृषु, केमती अच्छो? समस्ते जवाब देवा ट्राई करो।
तो इजी अच्छी जॉर्डन एंड सुशान गल्फ Indian economy as a bullock cart of capitalism as Rudolph and Rudolph basically it are reflect in coexistence tradition and non modern demands. Alongside modern capitalist structure in Indian economy, Lloyd and Susan Rudolph basically American scholar thile research करते Indian politics, economy, society उपरे. What will follow if money bill is substantially amended? It a very important question. Money bill is substantially amended by the Rajya Sabha. ये क्वेश्चन जवाब दियंतु. ये क्वेश्चन जवाब दबा माने एई थरो पॉलिटी रो पार्लियामेंट सेक्शन उ जहा क्वेश्चन आसीबो करि परिबो. ऋषु मुबिंदास तो समझते एडा आंसर दियो. समझते आंसर दियो पूरा. आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स गाइस. आइडिया लेकी देखनी तुमे जते पार्टिसिपेट करिवो सेते तुमको मजा आसीबो एंड एज वेल एज मेमोरी रे रहिबो. पैसिव पार्टिसिपेंट भलिया रुहो नाही. ट्राई टू बी एक्टिव पार्टिसिपेंट. बुझला ना नहीं बुझला? So the Lok Sabha may so the Lok Sabha may still proceed with the bill accepting or not accepting the recommendation of the Rajya Sabha. The Lok Sabha cannot consider bill further. The Lok Sabha may send the bill to Rajya Sabha for consideration. The president may call a joint sitting. So yes, you know, money bill has the sole authority under the Lok Sabha. So if Rajya Sabha amended, the Lok Sabha can proceed. Lok Sabha may still proceed the bill accepting or rejecting. It depend on the Lok Sabha, not depend on Rajya Sabha. Money bill is decided. Who decided the bill will be the money bill? Kuo samaste. So here A is the correct answer. A is the correct answer. Mate kuo ke decide karanti money bill ta. Who decide? Who decide a money bill? Who decide a bill is a money bill? किए decide करती? जल्दी जवाब दियो. Who decide bill money bill? किए decide करती? Speaker of Lok Sabha. Speaker of Lok Sabha. Then again I got questions. मते को Speaker of Lok Sabha. Speaker of Lok Sabha is elected or selected. Speaker of Lok Sabha elected or selected. Speaker of Lok Sabha Sukhoi. Speaker of Lok Sabha is elected or selected. Let me know. Speaker of Lok Sabha is elected or selected. Anyone? Speaker of Lok Sabha is elected or selected. Okay. So एमती कले समय पड़े सब खाली सो मनी बिल डिफरेंस बिटवीन मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल. सो तुमको दी प्रकार देखा पड़ो मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल. मनी बिल जो अच्छी आर्टिकल 110 110 110 1A 110 1A to G 110 1A to G ये मनी बिल अच्छी. Then financial bill 117 article under financial bill A, financial bill B. So look into this. These are very very important for your studies. Very very important. And money bill only can be introduced only in the Lok Sabha. So financial bill like a ordinary bill. Financial bill like a ordinary bill. Elected, very good. Not elected. Elected as a MP.
speaker is elected as MP but selected among the MP, right? Very important, very important. Speaker of Lok Sabha, very important position. Rajya Sabha is dissolved after every 2 year, 6 year, 5 year, but is not subject to dissolution. This is very easy questions. I hope ସମସ୍ତେ यार सही जवाब दब, ସମସ୍ତେ यार ठीक जवाब दब। हाँ जी, जल्दी जल्दी। Scenario number D, Lok Sabha is can be dissolved in every 5 year, but Rajya Sabha a permanent house, permanent house. So it is never. So every Lok Sabha member tenure kete? Lok Sabha member tenure, the member of Lok Sabha, the member of tenure, the term of the member of Lok Sabha, term of member of Lok Sabha and Rajya Sabha, member of Rajya Sabha. तो member of Lok Sabha term है 5 years, member of Rajya Sabha वाला 6. then ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, every 2 years 1/3 जे कि ऑफिस को छाड़ती ना नहीं। राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस and it is not subject to dissolution. देखते 1/3 of the member retire every can be only राज्य, it will be very easy one, very easy. This is 2015 OPSC question. This is 2000, so it may this year may not come this time, but concept regarding money bill can become. So you read upon this. ये लोकसभा है ना, will only introduce on article 110. लोकसभा has all powerful and speaker of लोकसभा any bill को money bill ऊपरे ठीक। पंचायत राज included in union list, state list, country list, none of the above. पंचायत राज PRI ସମସ୍ତେ आंसर दवा ପାଇଁ ट्राई करो, ସମସ୍ତେ आंसर दवा ପାଇଁ ट्राई करो गाइस, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ लाइक शेयर करो। पंचायत राज इंस्टीट्यूशन स्टेट लिस्ट अंडर अच्छी क्या स्टेट पाखर पावर अच्छी ओके 3 tier सिस्टम पूरा पंचायत राज डेट सेलिब्रेट करा जाए अप्रैल 24 रे कि इम्प्लीमेंटेशन होता 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1993 1991 रे एक्ट पास होता बट ये एक्ट इम्प्लीमेंटेशन होता 1993 रे 24 एप्रिल से पंचायत राज दिवस पालन करा जाए 24 एप्रिल। Who among the following has the power to issue ordinance under Article 129? This is very important one. So ये क्वेश्चन जो टिके तो मैंने जानी पड़ता अंडर आर्टिकल ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहिबो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। so under article 123 रहिबो, it is not 129. The question was came like this. So under article 123 the Indian constitution president can promulgate the ordinance. The doctrine of basic structure of Indian constitution are pronounced by Supreme Court of India in each of the following case. very important one and very important हला है कोना तारो जो समय रे हला जो समय रे हला एवं जो समय रे पास हला। yes, Keswananda Bharati versus state of Kerala.
ये 1973 केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 जो 7:6 रेशियो रे पास होइथिला लार्जेस्ट जज बेंच थिला 13 जज रे बेंच थिला से 7:6 रे जजमेंट पास होइथिला एवं ता पूर्वरु शंकरी प्रसाद केस इज आल्सो वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन so do remember that one शंकरी प्रसाद बेसिकली शुरुआत होइथिला सेइठू आर्टिकल 13 रे वेरी इंपोर्टेंट बहुत सारा इंपोर्टेंस अछि तो फॉलो शंकरी प्रसाद एंड मिनर्वा मिल केस you can right very good. Writs can be issued for the enforcement of fundamental rights by district court, high court, only supreme court only, supreme court as well as high court. Writ ki issue kari paribe largest constitutional bench. Right Sangram तो writ पढ़ाई तुमको writ issue करी पारे both high court as well as supreme court. High court and supreme court can issue writ and high court ro writ में writ जोटा कि some kind of discretionary power थाए under article 226 it is high court under article supreme court ये article 32 रे अंडर रे हमें सुप्रीम कोर्ट को बाध्य जदि फंडामेंटल राइट को वायलेशन नहीं बट हाई कोर्ट इज नॉट बाउंड एंड हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट वायलेशन छाड़ी आउ कौन भी इश्यू करि परिबो वेरी गुड सो is the correct answer D ये सब good 32 which one of the following was the first state to establish institution of Lokayat in India first state to establish the institution of Lokayat in India लोकायुक्त जल्दी जल्दी कह प्रथम स्टेट जे कि लोकायुक्त माने बुझी पारछ तो लोकपाल लोकायुक्त Maharashtra is the correct answer. So Maharashtra was the first state to introduce Lokayukt through the Maharashtra Lokayukt and Upa Lokayukt Act 1971. So Lokayukt first करथिले पंचायत के फर्स्ट करथिले फर्स्ट पंचायत किए करथिले को जेमति लोकायुक्त कले महाराष्ट्र संग्राम राइट पंचायत किए करथिला पंचायत आयसा कुआडे कहिदेला कि ओडिशा करथिला मिक्स कर दो जिनस गुड़ा तुम्हें बहुत सारा जिनस मिक्स कर बहुत ही क्लीयर वे पढ़ुन क्लारिटी दरकार पढ़ारे समस्ते गोटे लाइक कर समस्ते गोटे गोटे लाइक कर गोटे गोटे लाइक समस्ते कर so which of the following was the first committee to demand constitutional recognition for the panchayat which of the following was the first committee to demand constitutional recognition for the panchayat इटा को यस राजस्थान जे कि फर्स्ट पंचायत दिला कौन डिस्ट्रिक्ट रहितला कौन डिस्ट्रिक्ट रहितला
जी अशोक मेहता कमिटी प्रथम कन्स्टिट्यूशनल रिकग्नाइजेशन कही अशोक मेहता कमिटी जोटा कि जनता गवर्नमेंट करते डिसेम्बर 19 चेयरमैन से recommendation are mostly revive and strengthen the declining panchayat raj system in India. Collegium system was first introduced in relation to executive, legislature, judiciary, union state relation. Very important. एटा भी बहुत ही easy one. Collegium system ऊपर एबे news अछि. Election commission ର appointment and judiciary appointment ऊपर भी न्यूज अच्छी क्रिटिसिज्म अच्छी सो या ऊपर तुम देखि दउथो या एई कांसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन आसी पारे exactly सब एक्सपेक्ट करनी कि सेम क्वेश्चंस आसीबो you people are going to be a civil servant you should not expect the questions जोडे exactly जहां आसीतला से क्वेश्चंस आसीबो you need to know the concept will give you the answer not the questions previous question concept is very important college system judiciary collegium system adopted in 1993 by judiciary ही adopt करथला निजे जजेस रो अपॉइंटमेंट पाई ये इतला 1993 रे कि सेंट्रल विजिलेंस कमिशन फर्स्ट जजेस केसेस सेकंड जजेस केसेस मु क्लास रे भी पढ़ी थी जो मैंने मो क्लास रे ये सेंट्रल विजिलेंस कमिशन वाज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिशन एटा भी बहुत ये इंपोर्टेंट सीबीसी सीबीसी कमिटी राइट पीसी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन है इंटीग्रिटी ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी public administration it was established in 1964 as a result of the recommendation of Santhanam committee for prevention of corruption केते ऑर्गेनाइजेशन अछि करप्शन प्रिवेंशन पई जानि छ कोन तार यूज राइट which constitution amendment provided for the setting up of administrative tribunal in India setting up of administrative tribunal in India 24th amendment 42nd amendment 44th amendment 59th amendment एटा भी बहुत ही इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बहुत ही इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जोटा कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को आ जाएगा इस मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट से बहुत सारा चेंजेस होता 42nd अमेंडमेंट एक्ट कौ ईयर होता कोई परिवो 1970 1976 42nd Amendment Act which is referred to as mini constitution constitution mini ट्रिब्यूनल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जानिछ तुमे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ऊपर पढ़ी दबो तला कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ऑफिसर या एम्प्लॉइज रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट दे कैन गो डायरेक्टली टू हियर कैट को जाई परिवे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल स्टेट रो बेसिकली स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सैट ये हाईकोर्ट अंडर थाई नॉर्मली ये सबु हाईकोर्ट रो भी एटा भी थाए सबु हाईकोर्ट पाखापाखि थाए कौंटी कौंटी अच्छी देखीदेव लिस्ट करदेव सबू स्टेट न थाए बट मेजोरिटी स्टेट रो पाइबो ओके ओके ये कहले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वॉइस कंसर्न अबाउट द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल
ताराकुंडे कमिटी, सच्चर कमिटी, वोरा कमिटी, इंद्रजीत गुप्ता कमिटी। बेसिकली बेसिकली कमिटी जे कि पॉलिटी एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल ऊपर आसला। criminalization of politics एटा भी इजी अच्छी। वोरा कमिटी कहीं देखीदेल कि रे वोरा कमिटी 1983 रे वोरा कमिटी से criminalization of politics was constituted with the objective to identify the extent of political criminals nexus, political person and criminal nexus अलग टाइप nexus अच्छी the recommended ways which the criminalization of politics can be effectively dealt. Which of the following item are included in the union 7th schedule of the Indian? It is also very important. 7th schedule रे तुम्हें जानिच लिस्ट अच्छी गोटे यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट या प्रोविंशियल लिस्ट से अनुसार से कौन कहूँ ना यूनियन लिस्ट कौन अच्छी प्रोसीजर इलेक्शन द लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट मैरिज एंड डाइवर्स एंड बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी the following item included in the union. So criminal procedure code concurrent list. It is a very tough one. Election to the state legislature ये election commission of India करे. So basically union list under अच्छी. Marriage and divorce concurrent list. And bankruptcy and insolvency is also. Who is the correct answer? C is the correct answer. C will be the correct answer. Right? So, the procedure concurrent list, not in union list. Election legislature of the state. This is the union list. Entries parliament, state list, vice president, marriage and divorce, and similarly bankruptcy and insolvency concurrently. What do you understand by vote on account? Very important guys. कहीं इलेक्शन आमर होता इलेक्शन 2024 इलेक्शन ईयर रे बेसिकली हुए मु गोटे कि तुमको हिंट देदेली तापर तुम्हें आंसर दियो। Krishu, don't remember. Try to remember important items under the concurrent list, state list, like education, health, agriculture, forest, trade and commerce. Similarly, जोटा कि किसी पर्चा दिला criminal, law and order, police, health, सब किसी important देखी दियो जोटा कि कहा भीतर आसुची। जमी 42nd अमेंडमेंट रे चेंज होता स्टेट लिस्ट रु कनकरेंट लिस्ट को निया पांचटा आइटम से कौन कौन होता तो यही सब गुड़ा देख कैन नॉट रिमेम्बर द ऑल द आइटम्स पाखापाखि 250-300 पाखापाखि आइटम्स को तुम कैन नॉट रिमेम्बर 250 रु अधिका 250 पाखापाखि आइटम्स अच्छी हाउ कैन यू रिमेम्बर राइट यस जोटे एडवांस निया जाए जो इलेक्शन हुए ना सही समय एटा हुआ जाए वोट ऑन अकाउंट एडवांस इनिशियली इलेक्शन
पैसा दरकार तापर सरकार चलियो केमती advance to meet the expense until the process is completed to enact the appropriation act. So vote on account is a special provision in the Indian budgetary process. Normally annual budget appropriation act qua jai part at the beginning of the financial year, 1st April. But if the parliament is not able to complete the budgetary process before the start of the financial year, they allow government to withdraw money from the consolidated fund of India to meet the expense for the short period. It vote on account. Basically election year is provision is called put on 2 to 3 month ପାଇଁ ସେଇ ସମୟରେ ବଜେଟ୍ ନ ହେଇ ଦେନ୍ ପୁଣି ହାଫ୍ ଇୟରଲି ବଜେଟ୍ସ ଗୋଟେ ଆସିକି ନୂଆ ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତି ଯଦି following provision is not correct regarding the proclamation of emergency under article 352 the constitution. Article 352 these are all questions not correct questions are seen, not correct. So emergency under article 352 माने एटा कोन national emergency constitution is valid for a period of 6 months. So the proclamation is valid for a period of 6 months. Lok Sabha may pass a resolution to disapprove the emergency and force president to revoke it. Such a proclamation has been issued thrice so far. No such proclamation has ever been issued on the ground of war. देखा नेशनल इमरजेंसी इनिशियली प्रोक्लेमेशन करेंगे तार पीरियड वैलिड कहना एवरी 6 मंथ को ताको रिन्यू करवा दरकार पार्लियामेंट्री अप्रूवल दरकार यस दैट इज करेक्ट वन एंड लोकसभा में पास द रिजोल्यूशन टू डिसअप्रूव द कंट्री यस लोकसभा पास करि परिबो एवं लोकसभा जदि पास करिवो रिजोल्यूशन पास करिवो कि भाई एठी ये करनी माने आउ दरकार नाही ताहले रिवोक हे जिवो such proclamation has been issued thrice yes केते केते कहि परिबो and no such proclamation अरे बहुत थर वार हेछि खाली वार काहे कि हेनी so this is wrong so this is the answer बाकी all the option are correct one emergency issue 1962 war with China war with Pakistan both are on the ground of war तो ये केमिति दे दीजिए कि वार हेनी consider the following statement with respect to public account of committee very important guys parliament ru देखंतु केते क्वेश्चंस आसी you need to prepare for parliament well सर को करेक्ट क्वेश्चन से देखो एटा सब बेले देखुथबो रे न जीवन नै जो जीवन नै जीवो नॉट करेक्ट इनकरेक्ट ये जदि देखिबोनी तुम जीवन नै जीवो सावधानी हटी दुर्घटना घटी सावधानी हटेगा दुर्घटना घट जाएगा तो बिल्कुल सावधान रहो examine so public account committee examine the annual audit reports the comptroller and auditor general of the India K0 yes public account काम से यार मते को public account committee केते member अछथि how many member and how many member from Lok Sabha and how many member from Rajya Sabha and it was
एस्टाब्लिश एज पर प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अरे भाई और पब्लिक पार्लियामेंट रो अछि कॉन्स्टिट्यूशन रे, so this is not correct, wrong, two only not correct, one only correct. So the committee on public accounts set up in 1921 in the wake of Montagu Chelmsford reform, and the committee on public account underwent a radical change with the changing the course of the coming force of the constitution of India 26 January 1950 से चेंज होइतिला। जोटे पार्लियामेंट कमिटी हला ये बेसिकली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पीकर विथ नॉन ऑफिशियल चेयरमैन अपॉइंट बाय द स्पीकर फ्रॉम अमंग द मेंबर ऑफ लोकसभा। सो पब्लिक अकाउंट कमिटी केते जण मेंबर थांती 22 जण, 15 फ्रॉम लोकसभा। यस दैट्स राइट शत्रुजीत, यस वेरी गुड शत्रुजीत, थावीर वेरी गुड वेरी गुड। So which of the following directive principle, which of the following directive principles are added under the 42nd Amendment Act? Which of the following, which of the following directive principles are added under 42nd Amendment Act? Secure opportunity for healthy development of the children, secure opportunity for healthy development of children, promote equal justice and provide free legal aid to the poor, minimize inequality in income, status, and opportunity. Choose the correct answer from below given code. आबिर बहुत दिन पर देखा, केमती केमती कोन अछो, पढ़ापढ़ी केमती कोन चलची? Yes. So this is right, correct. Equal opportunity, healthy development. देखो 42nd Amendment Act, 42nd Amendment Act, 24th Amendment Act, 90 ରୁ 106 पर्यंत. First Amendment Act, 61st Amendment Act, 52nd Amendment Act, 71st Amendment Act, ये 86 Amendment Act do follow. The important Amendment Act do follow. कहीं ये तुमको बहुत बड़ा रोल प्ले करिवो। मो बिंदास अछि थावीर, तुम ना सुनला बेलो माइंड रिकल आसिला कि पढुतलो तुमे मो लागिला। ओके, so to minimize inequality in income, status, facilities and opportunity. So basically जे देखिबा wrong. So 1 and 2, 1 and 2 खाली करेक्ट आंसर पर एटा आगो देखुथबो करेक्ट पचारछि कि इनकरेक्ट पचारछि। 42nd Amendment in 1976 added 4 new directive principles. The original list they require state to secure opportunity for healthy development of the children under Article 39, to promote equal justice and free legal aid to the poor under Article 39A, and to take steps to secure participation worker in the management of the industry 43A, and to protect improvement environment to safeguard forest and wildlife protect wildlife 48A. Remember this is very important. How many DPSP? That is 1 2 3 4 DPSC chain and 44 रे एड हेतिला जोटा कि थर्ड वाला आइटम थिला, थर्ड वाला दिस इज 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 44 78 रे जब जनता पार्टी आस्तिला सेइथरे से कोनिना टू स्टेट टू मिनिमाइज equality in income, status and opportunities under Article 38. प्रणाम प्रिंस, केमती अछो? Clear guys, clear. Which of the following provision of constitution is related to instrument of instruction? Do you remember instrument of instruction? Instrument of instruction कहा को कहा जाए?
इजी अच्छी भाई। डाउट नहीं। The directive principle resembles the instrument of instruction enumerated in the Government of India Act. The word Dr. B.R. Ambedkar, the directive principle like a instrument of instruction. तो किए कही ये B.R. आंबेडकर कही इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से जोटा कि गवर्नर जनरल जोटा कि गवर्नर को कही से कि भाई गवर्नर ये भाया कम करवा दरकार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आसला तो डीपीएसपी व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग राइट्स एबे मु कही कि जो इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहाँ अच्छी 21 रु 18 गोटे हिंट दे दूची राजीव गांधी समय होता है 21 रु 18 होता जो एज लिमिट कमा होता ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राजीव गांधी जो मैंने यथर इंटरव्यू देते जहाँ मानकर बहुत ही टफ टाइम आई कैन अंडरस्टैंड जो मैंने देखुव या भितर भी सो आई प्रे फॉर हिम एंड भगवान शक्ति दिंतु एवं आई नो यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर सम डे सो यू नीड टू स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स because time is very less 15 days and don't demoralize start preparation from now onward. Whenever any doubt, any issues, let me know. Yes, 61st Amendment Act 1989 राजीव गांधी करथिले एटा राजीव गांधी करथिले रिप्रेजेंट एडल्ट फ्रांचाइज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज जोंडा कि 18 वर्ष रु दे परिबे एबे ओटा each of the following right conferred to person under article 20 right to be informed of the ground of arrest, right to consult and defended by the legal practitioner, right to be produced before the magistrate 48 hours including journey time. हाँ टिके फसैछि एथरा टिके फसैछि yes देखो केमिति फसैछि देखो इथरे B will be the correct answer. This is right to be informed the ground of arrest, right to consult and defended by the legal practitioner is also right, but right to be produced before the magistrate within 48 hours including नुहे बेटा 81st day excluding travel time या जर्नी टाइम को एक्सक्लूड करिया पड़िबो भाई देखो पूरा एमती पचार देछि क्वेश्चंस right to be informed, right to be consult different legal practitioner, right to be produced before the magistrate in 24 hours. Sorry, era 48 hours and 24 hour journey time. Journey time is there. Consider the following statement in the context of the constitutional provision for the territorial extent of the center-state relation. The correct one. The Constitution provides both state legislature and parliament to deal with extra legislation. Governor can modify application of the parliamentary law in all 6 areas. President can make regulation for all the union territories.
laws made by the state are applicable within the territory of the state only. Correct statement पचारची से पढ़ो क्वेश्चन टा भल से सेंटर स्टेट रिलेशन करेक्ट वन स्टूड 24 नंबर सी के कहूच के कहूच किए बी कहूच सो 6 शेड्यूल देख एबे तुमर हॉट टॉपिक अछि 6 शेड्यूल सम सोनम वांगडू मनसुंग वांगडू पीरियड मूवी रे सोनम वांगडू जोटा कि तुम्हें तांको ना शुणी एबे तांको डिटेन कराई एनएसए रे से 6 शेड्यूल डिमांड करथले लद्दाख रे The constitution empower both legislative power and parliament to deal with the extraterritorial territorial extra central state. Governor can modify application of the parliamentary law in all the 6 schedule area. All the parliament law governor can modify application of the parliament law. President can make regulation for all the union territory. All आसीगला माने सेठी के आसीगला देखो laws made by the state are applicable to the territory of the state only. That is 100% correct. E percent correct. Okay, को फसा आला सबु भूल भाल करी आसिलो भूल भाल करी आसिलो. The constitution of under article 245 define the territorial limit of legislative power vested in center and state. So state legislature can make laws for the whole or any part of the state only. Law made by the state are not applicable outside the state except when sufficient nexus state and the object. The parliament alone can make extraterritorial legislation. Thus, laws of the parliament are also applicable to Indian citizens any part of the world. टेरिटोरियल लेजिस्लेशन पार्लियामेंट करि परिबो बट स्टेट करि परिबोनी स्टेट सेटा फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू 73rd एटा तो इजी अछि 73rd अमेंडमेंट एक्ट 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस शेड्यूल 9 एंड आर्टिकल 243 of the Indian Constitution. The Act provides for 3-tier system of Panchayat Raj. Tier system Panchayat Raj in every state. Which of the statement given above are correct? Third Schedule 9 Article 243 the Constitution. Yeah, right. So जानिछ the Act provide for 3-tier system Panchayat in every state. Every state 3-tier ना 3-tier होइची बट डिपेंड करे नॉर्थ ईस्ट स्टेट रो नो tier state भी होची tier पंचायत भी
So this statement is wrong. This is only right. Check added part 9 and 243 ରୁ 240 ओ पर्यंत अछि पंचायत 11 शेड्यूल रे ऐड कराइछि ओथरे 29 फंक्शनल आइटम अछि 11 शेड्यूल रे ना डिटिया पंचायत राज एवरीथिंग दैट इज पंचायत एट विलेज इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट सो ये तो आसीछि बट जो स्टेट रे जोंडे पॉपुलेशन 20 लाख रु कम अछंती सेइथरे इंटरमीडिएट स्टेट ता रहिबो नाही दैट इज 2 इयर्स रहिबो डिस्ट्रिक्ट लेवल रे आउडेला पंचायत लेवल there will be no intermediate consider this से देखो ये क्वेश्चन पढ़िले लागिवो कि ठीक अछि दिटा आगो ना नहीं बट ता करो केमिति भूल होउची ए जो एवरी ई सब टिके सर्कमस्टेंट हेइयो जो एवरी ऑल थ्री लिखिथि फॉलोइंग state election commissioner appointed as well as approved by governor state election commissioner president of India is a finance committee state financial after every 5 years. The following are correct. बहुत इंटरेस्टिंग अच्छी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कौन कौच कह कौटा ठीक अच्छे या भितर स्टेट इलेक्शन कमिशन अपॉइंटेड बाय गवर्नर appointed as well as removed by governor wrong India constitutes finance commission in every state state रे कौन state ने center रे so neither one nor two state election commission state election commission constitutes state election appointed by governor condition of service and tenure of office shall be determined by the governor shall not remove from the office except the manner on the ground prescribed by the judge the high court hence cannot be removed by the government or president okay the high court but president can be removed president can be removed by the president the governor of the state shall every 5 year finance governor करिवो ना कि state finance commission consider following statement given below is a constitutional body established under article 315 of the section of UPSC can be by an act of parliament जल्दी करवा so both statement is wrong right wrong goji right both statement is right correct one UPSC established by the article 15 of the section UPSC can be by an act of parliament UPSC okay. Article 141 of the Indian Constitution deals with power of the Supreme Court to review its own law declared by the Supreme Court to be binding on all courts that territory original jurisdiction of Supreme Court and appellate jurisdiction of Article 141 very important one very very important बोलिए जल्दी बोलिए
law declared by Supreme Court to be binding on all courts in the territory. Article 1, the 141 state that law by the Supreme Court shall be binding on all courts in the territory. Sure, uniformity and consistency. Well, consider the following statement regarding the advisory jurisdiction of reference for advice may be made. The reference for the advice may be made to the Supreme questions of law or fact by the President. The dispute arising out of pre-constitutional treaties and agreements included from the original jurisdiction of the Supreme may also be referred it. So correct statement पचारिछि advisory jurisdiction कहलो advisory jurisdiction केते आर्टिकल केते अंडर आसुची आर्टिकल आंसर भी दियो ता सहित को advisory comes under which article of the constitution. Yes, Article 143, advisory jurisdiction of the 143, 143, 143 माने I love you. तो I love you जानी थी वो तो मन रखियो कौन कि सुप्रीम कोर्ट आउ प्रेसिडेंट मित्र लव रिलेशन तो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली एडवाइज करिवे कि कहा को प्रेसिडेंट को तांकर प्यार मोहब्बत रिलेशन एडवाइजरी जुरिडिक्शन आर्टिकल 143 डू रिमेंबर लाइक दिस so both statement are correct, both statement correct. So 143(1) president may refer the question of law or fact public importance to the Supreme Court for its advisory opinion. And article 143(2) kon president may refer dispute arising out of pre agreement convention etc. ये सब कही पारे excluding from the Supreme Court original jurisdiction article 1 छाड़ी देले आउ सब को opinion. Okay, which of the following is not an essential condition for appointment of judges of Supreme Court? Which of the following not an essential condition for the appointment as a judge of the Supreme Court? Citizen of India, at least 5-year experience of judge of High Court or 2 or more such court in must have completed 35 years of age, at least 10-year experience advocate of High Court or 2 years or more successor. कौन cause you not essential condition for appointment of judge of Supreme Court, not essential. There is no minimum age. There is no minimum age. There is no minimum age. That means 35 years of age. Not so. This is not correct. बाकी ये सब essential condition these are. नहीं दिया एडवोकेट हाई कोर्ट रे दरकार जज ऑफ हाई कोर्ट दरकार 2 और अब एडवोकेट जो एटलिस्ट 10 वर्ष थी जदि opinion distinct. The concept of judicial review in the Indian Constitution borrowed from. So मु सब एरिया को तुम टच करूची प्रेसिडेंट हो पार्लियामेंट हो फंडामेंटल राइट डीपीएसपी आई एम टचिंग ए सुप्रीम कोर्ट ये सब एरिया को टच करूची. जुडिशियल रिव्यू कौन आसला यूके यूएसए अमेरिका कनाडा इजी अच्छी यूएसए जुडिशियल रिव्यू famous case Marbury versus Madison in 1803 1803 ru. Consider the following statement. Article 157 lays down the
person must be citizen of India for the office of governor should be member of state legislature. Governor should have completed age of 40 years before appointment. या भितर करेक्ट कोनटा अछि एटा इजी अछि नहीं एटा भी बहुत इजी अछि आई होप यू कैन आंसर जल्दी आप दीजिए 1 घंटा हो गया और कुछ जल्दी जल्दी हमें करदवा चली वन ओनली तो भूल अच्छी जानी परछ माने तो ए आर्टिकल 1 पर पर्सन मस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हैव कंप्लीटेड 35 इयर्स ऑफ एज ये इधर का मिनिमम एंड डज नॉट रिक्वायर दिस द कॉन्स्टिट्यूशन इन फैक्ट द लेजिस्लेचर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर साइन दबा को पड़िबो salaries and allowances of the council and minister of the state government are paid from reserve bank treasury of the state government एटा damn easy one salary council of minister including cm आसीबो consolidated of the states ये both union and तुमर state union by consolidated fund of india state by of states reference to chief minister consider the following statement the chief minister preside over the meeting of the council act as a link governor and the council chief minister decide the portfolio of the minister एटा बहुत इजी अछि सब गुडा स्टेटमेंट अछि chief minister chief among the minister minister is chief among the match करो pardoning power and provision pardoning power lighter from the sentence deprive respite commute तो पार्डन करिया माने रिमूव कर दवा सेंटेंस एंड कन्विक्शन एटा 4 डिप्राइव एंड रेस्पाइट माने किसी समय छूट दवा ओके रेस्पाइट माने छूट दवा लेसर सेंटेंस दे दवा लाइटर सेंटेंस ड्यू टू स्पेशल फैक्ट्स यस रेस्पाइट दवा ताको माप दे दवा कम्यूट माने कोन कम्यूट माने लाइटर दवा म्यूट कम्यूट माने D4 D कम्यूट माने सॉरी लेसर सेंटेंस ड्राइव ड्राइव करिया माने कोन जवाब दियो डिप्राइव माने किसी समय पाई स्टे लागि जीवो एग्जीक्यूशन रे एंड रेस्पाइट माने लेसर सेंटेंस ड्यू टू स्पेशल फैक्ट कम्यूट माने लाइटर फॉर्म ऑफ सेंटेंस ए विल बी द करेक्ट आंसर is pardon deprive respite which of the following true regarding qualification for the election of the president it will be very easy अछि
The nomination of candidate for election to the office of president must be subscribed by the elector. The minimum minister of the union is not is said to occupy the office of profit. Candidate should have completed 35 years age. He should be Indian by birth only, not naturalization. So, which of the above statement are correct? By birth only, however, by birth only. B is the correct answer. बाकी ये स्टेटमेंट ट्रू अच्छी 50 प्रपोजर रहिबे 50 सेकेंडर रहिबे प्रेसिडेंट इलेक्शन रे द एज पर द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1950 कैंडिडेट नॉमिनेटेड इबडे आवा तक होल्डिंग द ऑफिस ऑफ द मिनिस्टर यूनियन स्टेट इज नॉट कंसीडर कने माने रही कि भी प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ी परिबे ता परे जाई कि छाड़िबे द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली रिक्वायर दैट द कैंडिडेट इज सिटीजन ऑफ इंडिया under article 58 citizen can be by birth descent by registration and or by naturalization which of the following is true regarding strength and election of the legislative council सब एरिया मु टच करेची जो जो एरिया मु टच करूची सेगुडा सब देखि दबो भल से राइट the president can exercise pocket veto in respect of state legislation. The pocket veto of Indian president is larger than that of American president. The qualified veto cannot avoid the president. There is no qualified veto in India, so 1 and 2, 1 and 2. The statement. The president has the veto power over the bill passed by the parliament, and that means he can withhold his assent to the bill. Veto is a Latin word which means to forbid. Which of the following have acted as as acting presidents of Zakir Hussain, Justice Muhammad Hidayatullah, and Haragiri Venkatgiri. Haragiri Venkatgiri. So, the following act as a president of India act for Zakir Hussain 2 and 3. So former president or Zakir Hussain thile president. He death ହେଇଗଲା ପରେ 69 he was third president of India and was regularly acted president not acting president regularly thile justice Hidayatullah जोंडे 69 रो थिले तांकर डेथ परे ये एक्टिंग थिले and Baragiri Venkatgiri 69 to 74 8 2 and 3 acting president मतलब जो फुल टर्म थिले चेक कर दबो एटा टिके तले वरागिरी और वेंकटगिरी ये फुल टर्म थिले ये एक्टिंग थिले कि चेक कर दबो जाकिर हुसैन तो कंफर्म थिले फुल टर्म ये कंफर्म अछंती एक्टिंग अब्दुल्ला बट ये एक्टिंग आउटफ्लो consider the following statement the legislature of the state may be adopt any one or more of the language in use of the state or Hindi as the official language of that state. The proceedings of the Supreme Court are to be carried out in English or Hindi only. Legislature of a state may adopt any one or more of the languages used the state or Hindi as the official language of proceeding of the state only the Hindi and only ସେଇଟା Supreme Court A only Article 340 345 legislature of a state may adopt any one or more languages in the state or Hindi as a official language. For Article 348 the language of Supreme Court and High Court is
English only unless Parliament provides otherwise. Hindi is not a permitted as an alternative. Which Amendment Act inserted provision regarding authoritative text of the Constitution in the Hindi language? ସବୁ ଏରିଆକୁ ଟଚ୍ କରାଉଛି ତୁମର 58 Amendment Act 1987. 58th Amendment Act 1987. Originally, the Constitution of India did not make any provision text of the later. A provision in this regard was made by the 58 Constitution Act 1987. This amendment inserted new article 394A in the last part of the Constitution. Part a national emergency when in operation with approval of the Parliament for maximum 1 year, maximum period of 6 months, definite period. ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ 6 month. ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ 6 44 amendment रे ଆଗରୁ say following state article 359 article 359 does not actually suspend the fundamental rights. Does not actually suspend the fundamental right. Article 20 and Article 21 can be restricted only in national emergency on the grounds of war or external aggression. Go jaldi go. Question cell Article 351 does not actually suspend the fundamental right. Which of the above statement is correct? Is correct statement. Article 20 and 21 can be restricted only during ये cannot be restricted haba, so this is wrong statement. So one Article 359 authorizes the president to suspend right to any court for the enforcement of fundamental during the national means 359 under a जो fundamental right आसी not suspend but they only their enforcement को तो सेति कोन ना मूव करि परिबन कोर्ट को जाई परिबन बट फंडामेंटल राइट को सच सस्पेंड करा जाए नहीं. Okay, said right are theoretically alive but right to seek remedy is a very critical concept. तुम्हें जानी थी कि आर्टिकल तुम्हें जानी कि आर्टिकल 20 और 21 छाड़ी कि सब सस्पेंड हो जाए बट सस्पेंड हुए नहीं किसी बेसिकली तुम राइट टू मूव कोर्ट और राइट टू सिक रिमेडी रिमेडी कौन सिक कर सुप्रीम कोर्ट रे या हाई कोर्ट रे ସେଇଟା तुमको सस्पेंड करा जीवो ना कि तुम्हें पूरा आर्टिकली सस्पेंड करा जीवो एंड 2021 तो तुम्हें चाहे किसी भी जाओ. Last few questions. Consider the following statement regarding Speaker of the Chairman of the General Purpose Committee can allow a secret sitting of the Lok Sabha. He acts as the ex officio chairman of the Indian Parliamentary Group, the Inter-Parliamentary. Which of the above statements are correct? Speaker, Chairman of the General Purpose Committee can allow secret sitting of the Lok Sabha. Yes. He acts as a ex officio chairman of the Indian Parliamentary Group. That is also right. The correct all matter final parliamentary matters. ये बहुत ही बड़ा पोस्ट है स्पीकर रो. Okay. Consider following statement regarding qualification and disqualification for being elected as a MP. Person should not be less than 35 years of age for being eligible elected to the Rajya Sabha. The person can be disqualified on the grounds of defection. Correct Pacharichi. 35 years. 35 years no 30 years. Wrong. Right. दिल दिया गला
जानिछ ना नहीं 25 वर्ष लोकसभा आर्टिकल 84 से आर्टिकल 84 राज्यसभा आर्टिकल 84 रे 30 इयर्स अच्छी डिफेक्शन लॉ जो 10 शेड्यूल रे डिस्क्वालिफिकेशन हो जाइबो जदि ताको डिफेक्शन करा जिवो पार्टी रु एंटी डिफेक्शन लॉ रा अनुसार ताको when the speaker preside over the house the deputy speaker is like any other ordinary member of the house. Speaker preside over the house the deputy speaker yes. When our deputy speaker is appointed as a member of a parliamentary committee, he automatically becomes its chairman. या भीतर कोनटा करेक्ट अछि तो कहिछि करेक्ट आंसर कहिछि सो डेप्यूटी चेयरमैन जदि अपॉइंटेड मेंबर हेले पार्लियामेंट्री कमिटी ताले से चेयरमैन हिजे राइट बोथ आर राइट डेप्यूटी स्पीकर हैज नॉट स्पेशल पावर जेतले स्पीकर प्रेजेंट रहबे से किछि नै से एज ए मेंबर ही सुनिबे बट डेप्यूटी स्पीकर देखियो पार्लियामेंट्री कमिटी सो ये गुटे एटा गुटे क्वेश्चंस थिला से को हुए ना बार डेप्यूटी स्पीकर अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑटोमेटिकली बिकम्स चेयरमैन एटा एटा भूल हम एक्चुअली यार आंसर बी हम खाली हेबनी लगुच एटा रॉन्ग अच्छी ऑटोमेटिकली हेबेनी तांकु अपॉइंट करिवे स्पीकर अपॉइंट करिवे चेयरमैन व्हाइल डेप्यूटी स्पीकर इज ए मेंबर ऑफ वेरियस पार्लियामेंट्री कमिटी their appointment as a member does not automatically make the chairman instead the speaker of lok sabha hold the power to appoint chairman of each of the following is are regarding the various funds in India. Check this check that one questions conflicting questions asle do check very important checking so which of the following regarding funds article 262 deals with contingency fund of India uh, true pacharichi public account of India and contingency fund of India do not need parliamentary approval for the using their money yes तो यूज करा जियो हेतर दरकार नहीं यूज कर साला पर तार अप्रूवल दरकार सो एटा ठीक अछि एटा भूल अछि कंटीजेंसी फंड नो बहुत तार रहइबो नाही तो बी विल बी द करेक्ट आंसर आर्टिकल 220 deals with accounts of India that is consolidated fund and public contingency fund of India dealt with article 267 minor difference हेले आपण फसी जाई पारंती see this one public account of India कौन ना money like public cap small saving government acts okay banker এই সময় थाए no parliamentary approval is required for the withdrawal contingency fund जेमती प्रेसिडेंट रखंती अर्जन पई आगे दरकार नहीं पार्लियामेंट प्रपोजल करे ताकू पार्लियामेंट प्रपोजल दरकार which pair is correctly matched supplementary grant granted for a special purpose access grant जे OAS ऑफिशियल चैनल जे जॉइन करना जो जॉइन ता थ्रो रे तुमे आहुरी इन्फॉर्मेशन पाई जिवो क्लासेस रे सब आहुरी आगो को सब सब्जेक्ट रो इकोनॉमिक्स वगैरह सब सब्जेक्ट रो टिल मोर 6 सेप्टेम्बर 6 अक्टोबर पर्यंत आमे आपण मन voted by Lok Sabha after the financial year vote of credit funds can be made available by reappropriation token grant or blank check correctly matched excess grant voted by Lok Sabha after financial year D will be the correct answer supplementary grant it is granted when amount authorized by the parliament through appropriation act for a particular service the current financial year not the next sufficient which found to be insufficient current financial year पैसा नथिबो supplementary grant करिवे जोटे कि थाए additional grant it is a grant when need has arisen during the current financial additional upon some new service not contemplated the budget for that year budget नथिबो सेटा को आउथरे additional then excess grant granted when money has been spent on any service during financial excess of the amount granted then token grant is a formal authorization of the nominal amount formal authorization of the nominal
देखो ये ठीक है normal authorization of nominal account such as a token 1 rupees on a new service or purpose that is yet not fully defined appropriation darkar which of the following is not changed charged on consolidated fund of India salary of CH grants of railway grants for railway administrative expense pension of the high court the consolidated fund of India ru charge करा जाए नहीं लास्ट टू क्वेश्चंस लास्ट टू या परे आ दुईटा क्वेश्चन रेलवे रो ग्रांट देला को सेइथरे चार्ज करा जाए नहीं ये हला the budget consider two types of expenditure that are expenditure charged upon the consolidated and the expenditure made from the consolidated charge expenditure non viable non votable for the parliament that is can only be discussed by the parliament while other type has been voted by the not charge on the last two questions the term budget now nowhere have been used in the constitution article 112 deals with the budget which of the following statement damn easy question both statement are correct one statement are correct आज जहाँ क्वेश्चन करेली you find in the examination some here and there same type of question get same concept of question get so do analyze each and every size do analyze last question which of the following is true regarding public and private bill which of the following true regarding public and private good bill passing of the public bill private bill is by same cannot introduce a private bill 1 month notice is needed to introduce private bill in the house 10 days notice is needed to introduce the house তা হবে true regarding private bill okay I'll share PDF in OS of official news official telegram channel join there join there OS of official telegram channel get there I'll share last question जल्दी जल्दी लिखो yes 1 2 3 10 days notice दरकार नहीं public bill पे minister cannot introduce private bill right is passing of a public bill private yes one so 1 2 3 bill has to pass through the bill is a proposal basically law बने पाई bill introduced in parliament are two kind गोटे public bill जोटा कि government bill जोटा कि कह जाए गोटे private bill जोटा कि private member bill जोटा कि member house रो private member इंट्रोड्यूस एनी मेंबर जे कि अदर देन मिनिस्टर होइथिबे बाकी पार्टी रो सेम रूलिंग पार्टी रो हेई पारे जोटा कि अपोजिशन पार्टी रो हेई तो प्राइवेट बिल कि इथरो पास भी हेई पारे जदि सपोर्ट करिवे गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे गवर्नमेंट बोली सबले मिनिस्टर इंडियन पार्लियामेंट ए 7 day notice required for introduce the public bill while private member that's it guys so thank you for watching god bless you all hope समस्ते चैनल को सब्सक्राइब करिछ एवं डेली तुम्हें रेगुलर अपडेट पाइबो ओएस ऑफ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल गेट पीडीएफ देयर एंड क्लास रो इन्फॉर्मेशन पाइजिवो till then bye bye guys take care god bless you all जय जगन्नाथ मेंस पाई तुम प्रीलिम भल से देखि दियो मेंस पाई आई एम कमिंग अप विथ मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम which is माने इंडिविजुअली तुमको गाइड करा जीवो जहार जहार प्रॉब्लम अछि एंड समस्ते जी भी प्रीलिम्स दउछ जी मेंस प्रीलिम भलो हो न हो प्रैक्टिस कर आंसर राइटिंग डेली मु डिस्कशन so till then bye bye guys take care god bless you